Azamgarh is about 100 kilometers from Gorakhpur, and it is a pain to go there because the road is very bad. It's under construction, so 100 kilometers takes more than 3 hours one way. But what really is the politics of Azamgarh, let's try to understand. And this is very, very significant, what we are trying to mention over here. Number one, there is an Azamgarh factor in the Purvanchal elections. It is the original playground of the Muslim Yadav combined. Samajwadi Party's MY factor, original playground. Yadavs and Muslim voters combined cross 50% votes in the 10 assembly segments in Azamgarh. That is why the perfect playground for the Samajwadi Party. No wonder that they consider it as a fortress, a place from where they always win, or at least try to. Let's look at the breakup. So there are about 24% Muslims, 26% Yadavs, and also 20% members of the SC community, which is why last time in 2017, during the peak of the Modi wave, peak of the BJP wave, 5 seats went to the Samajwadi Party, 4 to the BSP, and only 1 to the Bharatiya Janata Party. So how are things different this time around? Well, you must know that Azamgarh also has strangely a terror tag and a baggage of stigma. If you recall that there were 5 residents sentenced to death in the 2008 Ahmedabad blast, and that discourse is a discourse for Netas. It took place in this election as well. Netas mentioned Azamgarh in the campaign rallies in UP elections. BJP accused Akhilesh of having terror links and indulging in minority appeasement. An accusation was after 5 2008 Ahmedabad blast convicts hailed from Azamgarh. In fact, if you remember, in this very election campaign, the election symbol of the Samajwadi Party was also used to target the Samajwadi Party by the BJP. Whether it works or not, one does not know. But interestingly, there is an Owaisi factor right here, and that is very, very significant. Why do we say the Owaisi factor? Because the very ground where the Muslim Yadav combine was formulated by the SP is the place where Asaduddin Owaisi of the MIM is trying his luck with the MD factor, replacing the MY factor with the MD factor. What is this? The Muslim Dalit factor. Just go back to the breakup of the population. Muslims 24% and the SC community 20%. Put them together and that is a 44% vote. If someone manages to capture the imagination of this 44%, can they potentially swing the votes in their favor? Owaisi thinks so. Many of his opponents feel that this is his wishful thinking. But what exactly is he doing, and can he make a difference? Let us quickly take a look at this presentation, what Asaduddin Owaisi is doing in Azamgarh. जब अखिलेश से पूछा गया मुस्लिम वोट के बारे में बोलो, तो क्या अखिलेश बोले? अखिलेश नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले कि अखिलेश जानते कि आप खरीदी है उनके। क्या आप उनके खरीदी है? क्या आप गरीब बिछाएंगे? क्या आप गरीब बिछाएंगे? क्या आप अब्दुल जमाली को कामयाब करेंगे? क्या आप अखिलेश को हराएंगे? ये बात So in Mubarakpur, in Azamgarh, you can see that Asaduddin Owaisi is playing a crucial factor among the youth right here, where he's appealing to the people over here that Muslims must choose a new alternative and not just stay with the Samajwadi Party. Now this is known as the bastion of the Samajwadi Party, but in Azamgarh, can the Owaisi factor actually work or make a difference? And if this works, does this mean disadvantage Samajwadi Party? आपको ये भरोसा क्यों है कि यहाँ से आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी नहीं, आपकी पार्टी और आपका प्रत्याशी जीतेगा?
देखिए, जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो आप लोगों को दिख नहीं रहा है। हम लोग 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आप जैसे लोगों से अपील करूंगा कि थोड़ा जमीन पर हकीकत भी देख लीजिए। मैं तो आया हूँ यहाँ पर। हाँ, आप आए हैं, आप देख रहे हैं। हमको यकीन है, जनता पर पूरा यकीन है कि गुड्डू जमाली साहब ने जो काम किया, उनसे नाइंसाफी हुई, और मजलिस की जो एमआईएम की लड़ाई है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। हमको यकीन है कि हमको यहाँ की जनता, पूरे समाज के लोग अपने वोट से नवाजेंगे। बिहार मॉडल रिपीट होगा जैसे आपने बिहार में सरप्राइज किया था। देखिए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हिस्सेदारी की, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ। बाबू सिंह कुशवाहा इसके कन्वीनर हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि अच्छा लगता है नतीजा। यूथ आपके साथ है। हमको लगता है कि पूरा समाज हमारे साथ है। सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ दलित नहीं, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों का एक बहुत बड़ा तबका, ओबीसी भाइयों का तबका हमारे साथ और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हंसला आतिक है सर। अच्छा, और आप यहीं आजमगढ़ के रहने वाले हैं? जी सर। ओवैसी साहब की आप रैली अटेंड करके आ रहे हैं, ऐसा इनमें आपको क्या अच्छा लगता है? सर, जहाँ तक की बात है, हमारे मुसलमान के जितने भी इशू होते हैं पार्लियामेंट से लेकर कहीं भी, सिर्फ ओवैसी साहब बेबाकी से हमारी बात रखते हैं, और उसके अलावा सर किसी की भी ज़बान नहीं खुलती। सेकुलर पार्टियाँ तो सभी कहती हैं, लेकिन 3 तलाक हुआ, चाहे कोई भी मुद्दा हुआ, सिर्फ ओवैसी साहब बोलते हैं। इस वजह से भाई, यहाँ इस जगह को गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का कि 2017 में जब लहर भी आई बीजेपी की, तो यहाँ तब भी करीब 5 सीट तो निकाली ले गई समाजवादी पार्टी। तो ऐसा अब आपको क्यों लग रहा है कि ओवैसी ज़्यादा सही है और समाजवादी पार्टी नहीं? सर, ऐसा है कि जिस वक्त लहर में इनको 5 सीट मिली थी, उसमें बसपा से इनका अलायंस था, इसलिए इनको 5 सीटें मिली। इस बार तो शायद इनको 3 ही या 4 मिल जाए तो गनीमत है। इन पर आरोप भी लगता है कि ये आज भी इन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि हम बीजेपी की बी टीम, हमारे ऊपर कुछ आरोप, ये आरोप वो आरोप। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर आपको लगता है कि ये अगर कुछ वोट ले जाएंगे तो सपा को नुकसान पहुंचेगा और बीजेपी को फायदा होगा? सर, सबसे बड़ी बात यह कहने को तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हमारा जो कोई नेता आज तक कोई अगर पूरे इंडिया में हुआ तो ओवैसी साहब हुए। So the assessment was that a lot of youngsters, we saw in that rally that a lot of youngsters were keen to listen to an Asaduddin Owaisi. Whether his speech, fiery speech in which he also said, "Do you love me?" Then people say yes. Then he said, "I also love you." इसे कहते हैं दो तरफा प्यार, which means that we both love one another, not like Akhilesh Yadav who only uses you but does not love you. That's the message that Owaisi is trying to take to the people. But will this message go beyond this rally and translate into a vote for the MIM? Or is MIM just attempting to make a difference whereas it may not really be successful? Let's quickly take a look at the seats in Azamgarh, and we find this a very, very interesting district to profile. So you've got Gopalpur in 2012 with the SP, in 2017 with the SP, Sagri 2012 with the SP, 2017 with the BSP. So if you see, no BJP so far. Mubarakpur, where this rally was being held of Mr. Owaisi, 2012 BSP, 2017 BSP, stayed with the BSP, surprisingly, not SP. Azamgarh Sadar, which is the city, was with the Samajwadi Party in 2012, remained with SP in 2017. Mehnagar, again with the SP in both these years. Atraulia with the Samajwadi Party both these years. Nizamabad with the SP both these years. Phulpur was with the SP in 2012, went to the BJP surprisingly to 2017. Didarganj with the SP first in 2012 and in 2017 with the BSP. And Lalganj also switched to the BSP from the SP in 2017. So as you can see, BJP has not performed well in Azamgarh.